हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भूषण। आपका स्वागत है भूषण रिपेयर्स में। आज हमारे पास एक आयरन रिपेयर के लिए आया है। देखिए, इस आयरन में जो प्रॉब्लम है वो ऐसा है, ये जिस टेम्परेचर पे हम सेट करते हैं उस टेम्परेचर पे ये सेट नहीं होता है। ये हम कहीं पे भी घुमा ले, ये कंटिन्यूस ऑन रहता है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, इसलिए हमें आयरन को खोलना पड़ेगा। चलिए हम आयरन को खोलते हैं। देखिए दोस्तों, हम थर्मोस्टेट को घुमा रहे हैं, लेकिन वो स्विच ऑपरेट नहीं हो रहा है। शायद वो चिपका हुआ है। हम थर्मोस्टेट को खोलते हैं, उससे हमें ये पता चलेगा ये क्या हो रहा है। ये देखिए, नया थर्मोस्टेट है, ये ठीक से ऑपरेट हो रहा है। चलो हम इसको लगाते हैं। देखिए, ये पुराना थर्मोस्टेट है, ये चिपका हुआ था, लेकिन जैसे हमने इसे खोला ये फिर से रिलीज हो गया है। अगर हम इसे फिर से लगाते हैं तो शायद ये फिर वही प्रॉब्लम देगा, इसलिए हम नया थर्मोस्टेट लगाते हैं। देखिए, ये नया थर्मोस्टेट हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया। अब ये जैसे हम घुमा रहे हैं, ये नया थर्मोस्टेट ठीक से ऑपरेट हो रहा है।
देखिए आयरन सब फिट होने के बाद अब ये हम इसे ऑन करके देखते हैं तो जैसे ही ये नॉब घुमाते हैं तो ये ऑपरेट हो रहा है और ये ऑटो ऑन ऑफ भी हो रहा है। इसका मतलब थर्मोस्टेट का प्रॉब्लम था जो हमने अब बदल दिया है, तो इससे आयरन ठीक हो गई है।